सैनिक क्रांति, राष्ट्रपति शी जिनपिंग नजरबंद। कितनी बड़ी खबर, वह भी भारत के मीडिया में। मैंने दुनिया का मीडिया देखा, लेकिन कहीं ऐसी खबर नहीं। वैसे आज के वक्त में अफवाहें, स्पेक्युलेटिव रूमर्स आम बात हो गई है। ऐसी अफवाहों से सोशल मीडिया भरा होता है, मगर भारत के नेशनल न्यूज़पेपर जैसे हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे यदि खबर ब्रेक करे तो पहली नज़र कैसे सोचे कि फर्जी फेक खबर है। इन पर भी क्या भरोसा नहीं करें? है क्या माजरा है, क्या मामला है? नमस्ते, मैं श्रुति व्यास। हिंदुस्तान टाइम्स में 25 सितंबर की खबर थी कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिसिंग, वे लापता हैं। रूमर्स ऑफ अ मिलिट्री कू इन चाइना। उसी दिन इंडिया टुडे ने भी यह सनसनी बनाई कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ऑफ मैसिव फ्लाइट कैंसलेशन एंड एम्प्टी एयर स्पेस ओवर बीजिंग फ्यूलिंग कू रूमर्स। मैंने और जगह चेक किया, वर्ल्ड मीडिया, न्यूज़ एजेंसीज को देखा, ऐसी खबर कहीं नहीं दिखी। तब खटका कि इंडियन मीडिया क्या अब वर्ल्ड लेवल की फेक न्यूज़ भी बनाने लगा है। देसी फर्जी न्यूज़ बनाते बनाते अब वर्ल्ड लेवल की रूमर्स छापने लगा है। यूं जमाना फटाफट हेडलाइंस और सनसनी का है। इन दी जमाना ऑफ क्लिक बेटिंग, ट्विटर एंड 30-second रील्स, rumors staving off social media are being fed to the जनता as news. सोशल मीडिया या किसी देशी खुफिया एजेंसी की कोई अटकल भी हो सकती है जिससे इंडियन मीडिया got overly excited. And based on those rumors, the country's leading media channels made sensationalizing headlines. हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे के बाद 26 सितंबर को जी न्यूज़ ने क्लेम किया amid rumors of military coup in China. सही है कि recently there were some rumors over social media about China. The source of these headlines were posts on the internet by certain popular Twitter accounts that are popular for their updates on China. These popular accounts used their sources as unconfirmed rumors without realizing that such words, unconfirmed rumors, that were loaded with unsureness, ripe with dubiousness. Yet, for 2 days straight, unconfirmed rumors was the biggest news for new gen Twitterati journalists. मुझे ये बात बेसलेस समझ आया। जिन अफवाहों में कुछ नहीं होता है, वे कैसे खबर बन जाती है। सुनी सुनाई बातों, अफवाहों पर हार्ड न्यूज़ बनाना कैसे संभव है? And why should more news be made out of a new news that is pure baseless? Why join the bandwagon of hearsay when not one international media outlet or agency had mentioned such news? यही गोलमाल है. And the story within itself, explained my editor. And लगा, है तो सही. रूमर्स के बेसिस पर हमारे यहाँ ग्रैबिंग एंड रेकमेंडेड हेडलाइंस बन रही है, और वह भी चीन को लेकर। इस पर आगे बात करूं उससे पहले चीन की कथित न्यूज़ की एक बैकग्राउंड जाने। अ लिटिल बैकग्राउंड ऑन व्हाट द रियल चाइना न्यूज़ वाज। मतलब कोई उथल पुथल है। अ कू हैड हैपेंड इन चाइना एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैड बीन डिपोज्ड। तो सत्ता बदलने की क्रांति। कू की अफवाह पर कुछ अनसर्टेनिटी थी, तो सोशल मीडिया के कलाकारों ने उसको फिर एक शेप दिया कि speculations have become ripe after Jinping was said to be missing from the public eye following his return from the Shanghai Cooperation Organization, a meeting that was held in Uzbekistan. Xi Jinping's first official foreign visit since the start of the COVID-19 pandemic. पर इससे ट्विटर पर ज़्यादा ट्रैक्शन इन लाइक्स एंड रीट्वीट्स का नहीं बना, और इंडियन मीडिया टू नीडेड मोर ड्रामा टू गेट द क्लिक्स, सो दे पोस्ड द क्वेश्चन। सवाल बनाया कि आर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कमर्शियल फ्लाइट्स इन चाइना बीइंग कैंसल्ड, फॉर इट सीम्स लाइक फ्यूअर पैसेंजर फ्लाइट्स आर गोइंग इन एंड आउट ऑफ बीजिंग एंड ट्रेन्स और बसेस भी कैंसिल हो रही है। Now we all know, and it has been no secret, but with China following zero COVID policy ever since the pandemic,
China's flight traffic has been minimal. बट कौन फैक्ट चेकिंग एंड लॉजिक में जाए? और जब सोशल मीडिया बोल रहा है तो ऑफ कोर्स बात में तो दम होगी ही। दाल एकदम काली हो गई और अफवाह को तड़का मिला कि शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट हो गए। His ministers are being jailed and sentenced to death. Yup, all filled with a lot of unconfirmed suspicion and hearsay. So why did Indian media played this news for 2 whole straight days? Why was it the recommended news and must read on many's website? Well, it's simple. Times have changed. News don't make news. Rather, hearsay is the new news. Majorly also because journalists too have become incurious about the real nature of news, and the new gen journalists of Twitter are totally unclear as to what truly constitute news. ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देती हूँ. A little while ago, a journalist of a major Hindi news channel had posted a short video from the film Dawn, where Shah Rukh Khan was saying that he hates the orange clothes he has to wear in jail. This video was accompanied by text along the lines of, he had always been anti-Hindu. Now this journalist has a good following in masses on Twitter. So naturally, the tweet got viral and became part of the boycott Pathan trend. यही तोड़ मरोड़, ऐसे ही तुको वे ट्विटर और पोस्ट से भारत में इन दिनों पत्रकारिता हो रही है. This is what journalists of today feels journalism is all about, and this has become their bit of giving and providing news. This constitutes news, for it is all about the propaganda which is served hot as news. At times we have seen journalists, many senior included, who in the bid to win the rat race of breaking news on Twitter gets fake news mixed with the real news. जाहिर है फेक न्यूज़ कैसे फटाफट असली न्यूज़ की तरह फैला दिया जाए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता है. फेक और रियल, this distinction is undistinctive, and widespread confusion and disagreement over what's real and true really does not matter in today's time. पुरानी और नई पत्रकारिता का एक फर्क यही है कि पहले न्यूज़ was defined as what happened yesterday. It was the traditional meaning of news. For newspapers, the radio, magazines, they all provided news of yesterday, यानी कि जो हो चुका है. लेकिन as time moved rapidly, so changed the definition of news. आज खबर वह है जो अभी है, और अभी की खबर में अफवाह या एजेंडा को तड़का लगाकर पेश करना ही खबर है. Yes, today news is what happened now, and breaking news is the definition of news. Newspapers, radio, magazines, they have as such become redundant, inessential. They have become speculative in nature. Many phony, and most of them mostly about Ashok Gehlot has just left his residence to meet Sonia Gandhi, or Prime Minister Modi has reached Japan to attend the funeral of former Prime Minister Shinzo Abe. यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए मोदी जी जहाज से बाहर आ रहे हैं. ये है एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ हमारे न्यूज़ चैनल पर. एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन इट गोज़. इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि चीन की अफवाह के न्यूज़ धमाके के पीछे आखिर ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा. चीन में सैनिक क्रांति का भारत में हल्ला क्या किसी रियल खबर से ध्यान हटाने के लिए तो नहीं था. नोट करें, इन अ सितंबर 19th स्टोरी इन द गार्डियन, जो लंदन का वैश्विक अखबार है, ने लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट इज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ सीडिंग लैंड इन हिमालयाज टू चाइना, citing locals from Ladakh, and I quote one of them. Earlier, our concern was about Chinese incursions only, but now the situation is more worrying as our government is giving up our land happily. If India's approach remains the same, we're going to lose more land. भारत द्वारा चीन के लिए जमीन छोड़ने की ये खबर
उस सहमति के बाद आई थी कि जब दोनों देशों की सेनाओं में विवाद के इलाकों से पीछे हटने और बफर जोन हटाने की सहमति दी। कैसी गंभीर खबर है जो हमें गार्डियन में पढ़ने को मिली, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में ही ऐसी रिपोर्ट छपा करती है, क्योंकि हमारा मीडिया तो चीन में सैनिक क्रांति की खबरें रचने, राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट दिखलाने के आइडिया सोचता हुआ होता है। जो हो, इतना तय है कि हम भारतीय पत्रकारों की पत्रकारिता का भगवान मालिक है। If rumors are real news, then ineptness of the journalist is to be blamed, along with them being consciously cruel and unreal to the profession and its ethics. आज के लिए बस इतना ही। Thank you for listening. Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.